Am I live? Can anyone in the comment section confirm? Are we live? Is my voice clear? Voice audio clear? Hello everyone, Hello. I am Keshav, team member at AR Club and Sorex Network. As we always say, being a nationwide community, this becomes our duty to get technical and overall growth activities for students. AR Club, globally known as Sorex Network, organizes events, sessions, and hackathons with industry experts and companies to boost student learning and reward them with swags and prizes. Thank you so much for showering love and support on our previous events. We are a strong 2.5k plus family now. In our community, a lot of people didn't know about Hacktoberfest, and now they have begun for this, we have begun for this to educate and aware them about the Hacktoberfest, open source and GitHub. Today we are here with Mr. Avinash Singh to guide you on the unlocking Hacktoberfest. He is associate software engineer at Nagarro. I hope this session will add value to your upskilling journey. Now I would like to hand over the virtual stage to our speaker, Mr. Avinash Singh. Yeah. So, hi everyone. Before introducing myself, I hope this session will be very good for you for your career dream, what things you're gonna do in future. So, let me introduce myself first. I'm Avinash. I'm BTech CSC 22 graduate. So, I'm working at Nagarro from 1 year, and from 1 year I've been worked on various projects, so I have learned a lot of things. With that, also I was doing many things which I want to share, and I will tell you how I can help you in your journey. So introducing, let me share the today's agenda, what we're gonna learn or things. Yeah, let me share my screen. If you have any doubt or anything, you can just ask me in the comment section. We'll take your query. So, talking about Hacktoberfest, first we need to know what is open source, right? So we're gonna talk on that topic. Let me talk about my thing. What How can I help you in that? So basically, as a college student, when I was in a college, so I was always thinking what I can do to improve my profile, how I can learn few new things. So in that I started like growing a network is a very good thing. With that you get many opportunities, many things. So what I have started in my third year or in start of the final year, I started sharing content related to opportunity updates, internship jobs, coding contest. And so with that, from 1 year I have improved my LinkedIn profile, I have optimized it. So optimizing a LinkedIn profile is very important, because with that you get a lot of opportunities. Recruiters approach to you, they see your profile is very active, so yeah, they give the opportunity. So with that, you can see I have grown my LinkedIn profile very well. And what I do is that I regularly share updates regarding, you are a college students, you must be looking to participate in some contest like coding contest. This is like Hacktoberfest, or you looking for internships. So I can help you in that. I have created a channel where you'll get all off campus updates, like any internships, coding contest, all these things. Apart from that, I can also help you in your resume. I have few good resume templates. You must be needing a resume for your application of internships and jobs. So I can help you in that. I have few good uh, resume templates, plus I'll also have a cover letter. So basically cover letter is something which adds backup of your resume. It is also very important in some organization, they ask cover letter.
So I'll be helping. Apart from the session, I can help you in these things. So if you have anything to ask, you can reach out to me on LinkedIn. I'll guide you in your career path. Okay. So let's back to the session or main agenda of the topic. So Hacktoberfest. So basically, in this session, we're gonna talk about, yeah. So today's agenda is what is Hacktoberfest and why you should contribute to this, and what are the benefits, how will this will help you. So before talking about Hacktoberfest, first we need to understand what is open source. Basically, this is all about open source. Hacktoberfest is all about open source. So basically, when we heard a word open source, it tells that the code, the things you are talking about, is available for users to modify, to correct. For and if we talk about what is open source software or project, basically it is a open source software where people can enhance your code, modify it, track it, or anything. So opens, you need to know that what is, how can we contribute to those sorts. We were gonna talk on the all the topics. So let's start the another session. So basically, what is Hacktoberfest? Hacktoberfest is a annual event. Means in the month of October, it is organized by Digital Ocean Company. In the month of October, they organize a event, this Hacktoberfest. In that, they host some projects. People also host their project to contribute. In that event, they give some criteria how you can contribute, and if you cover those criteria, they will give you rewards. So you have to make full four contribution to any of the repository which is mentioned under Hacktoberfest. So why, yeah, we were talking about why we should contribute to open source projects. So uh, बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हम जानते हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर आपको फ़ायदा ही नहीं पता होगा कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो आप उस काम पे इंटरेस्ट नहीं रखोगे और उस पे कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं करोगे। तो आपको क्या इससे फ़ायदा होगा अगर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में, सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करते हो और हैकटोबर फेस्ट में पार्ट लेते हो, उससे क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता नहीं रहता कि आप क्या-क्या चीज़ें अपने प्रोफ़ाइल पे ऐड कर सकते हो ताकि आपके जॉब्स के लिए आपके हेल्पफुल रहे। तो ये एक तरह की ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से आप अपनी एक स्किल शो कर सकते हो दैट यार Excuse यू me, आर, या भैया please share your LinkedIn profile. या Students are श्योर, demanding it. श्योर। It will be in shared in chat, I guess. Someone may share that link. Yeah. सो एक तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। आप कुछ न्यू स्किल्स इससे सीखोगे, साथ साथ में आप ये जो न्यू स्किल्स सीख रहे हो उसको आप रिज्यूमे में आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत लोगों का ये होता है, डाउट होता है कि वो अपने रिज्यूमे में क्या ऐड करे। मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस देखे हैं कि उनके रिज्यूमे पूरा एम्प्टी रहता है, वो फाइनल ईयर में है बट उनके पास कुछ है ही नहीं शो करने के लिए कि वो अपने रिज्यूमे में क्या ऐड करे। ना वो कोई एक्सपीरियंस सेक्शन नहीं ऐड करते हैं, ना वो कोई प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं। तो इसके थ्रू, हैकटोबर फेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको एक तो एक्सपीरियंस सेक्शन में एज अ ये इंटर्नशिप काम करेगा कि आपने एक मंथ आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट किया, तो ये आपके रिज्यूमे में एज अ इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड करने में हेल्प करेगा। साथ में आप इसको एज अ प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी रिज्यूमे 10 टाइम्स मोर बेटर, अच्छा दिखती है। तो एक तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, साथ में नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। विथ नेटवर्किंग यू आप नए नए लोगों से मिलते हो, जो जैसे कि हम किसी फील्ड में अच्छे हैं बट आपसे भी अच्छे लोग हैं, आपसे भी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उनसे सीख सकते हो। तो इसके थ्रू आप नए लोगों से मिल सकते हो जो कि आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं। लाइक यू आर मीटिंग मी विथ दिस हैक्टोबर फेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉप
on Hacktoberfest, you are meeting me. So you can learn something new thing from me. You can reach out to me through LinkedIn, right? So networking, you learn, you get a good networking with that. Third thing, contribution to open source. By contributing to open source projects, you help improve software used by people globally. So इससे क्या होता है, आपकी एक वैल्यू बढ़ती है कि आप किसी ओपन सोर्स, किसी वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर में अगर आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया, तो एज आपकी प्रोफाइल आपको वैल्यू मिलती है कि हाँ इसने इतना अच्छा किया है, ही इज अ वेरी वैल्यूबल, एंड यू गेट ऑल दोज थिंग्स। और लास्ट में स्वैग्स। तो हैक्टोबर फेस्ट कुछ स्वैग्स इसमें रखती है, जो आपको उनके वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि क्या क्या। इस साल थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं कि उनके गुडीज में, बट लास्ट ईयर वो स्टिकर्स, टी शर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स दे वर गिविंग। सो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो हैक्टोबर फेस्ट पे? सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी गिटहब अकाउंट की। सो बेसिकली हमें अब नेक्स्ट टॉपिक ये पता करना है कि गिटहब होता क्या है बेसिकली। सो गिटहब एक तरह का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोड को रख सकते हो और लोग कोलैबोरेशन के लिए यूज करते हैं। लाइक यू कैन स्टोर ऑल योर प्रोजेक्ट्स विच यू आर मेकिंग during your college life, and you can also host static pages, static websites or projects। तो एक तरह का ये गिटहब आपका रिज्यूमे का काम करता है। जब कभी भी आप जॉब में अप्लाई करते हो, तो आपको रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए आपका गिटहब, क्योंकि रिक्रूटर्स क्या होता है कि वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया, तो वो वहाँ पे गिटहब अकाउंट मांगते हैं। अगर आपने गिटहब अकाउंट मेंशन नहीं किया तो आपके लिए काफ़ी as compared to another person which has mentioned their GitHub account, they will visit and they will share, they will see their work. With that they get the benefit, getting the chance of selection। So आप अपने गिटहब अकाउंट को एक तरह का एक रिज्यूमे बना सकते हो। ये मैंने अपने गिटहब अकाउंट को मैंने ऑप्टिमाइज किया है, सारी चीज़ें ऐड की हैं। ये मेरा अकाउंट है। अगर और किसी नॉर्मल पर्सन का अकाउंट देखना है उसका कैसा है, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन, this is normal government, you can see the difference, like he haven't added anything, it is empty। So how you can make your GitHub account like me, I'll help you in that also। So how you can do that, so first we need to participate in the Hacktoberfest, we should need a GitHub account। So go and create your GitHub account if you haven't had, and if you had, then we can move the next section, register for Hacktoberfest। So next step would be like you have to go to the Hacktoberfest website. Okay. So here you'll have the option start hacking. When you click on that, it will automatically register through GitHub account। So you can register through GitHub, or similar software or platform is a GitLab। So we are talking about GitHub. So you can register. You click here, and it will load to your GitHub account, and you can register with that। Okay, talking about next thing, फाइंड प्रोजेक्ट्स टू कंट्रीब्यूट। चलिए, आपने रिपोजिटरीज बना ली, सॉरी, आपने रजिस्टर कर लिया, बट आप कहाँ पे प्रोजेक्ट्स ढूंढो, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कहाँ पे मुझे मिलेगा? तो अभी आप नए होंगे, बहुत लोग को पता होगा, कंट्रीब्यूट किया होगा, बट बहुत लोग को भी नहीं पता है कैसे मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है। तो सब कुछ आपको, कुछ इसकी चिंता नहीं करी, सब कुछ अवेलेबल है, मैं बताता हूँ। तो आप क्या करो, इनकी ही साइट पे, हैक्टोबर फेस्ट की साइट पे आप पार्टिसिपेशन सेक्शन में जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन्होंने हैक्टोबर फेस्ट में पार्ट जो जो रिपोजिटरीज हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं अक्टूबर फेस्ट में, वो मेंशन है, ठीक है? वो अब मेंशन है आप इन, जिसमें अक्टूबर फेस्ट का लेबल है, समझ लीजिए कि वो रिपोजिटरी वो पार्टिसिपेट करिए, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कंट्रीब्यूट करना है, बट आप किस में कंट्रीब्यूट करना है? सबसे पहले आपको अपना डोमेन चूज करना होगा कि लाइक आप रिएक्ट में करना चाहते हो, या नॉर्मल HTML CSS में करना चाहते हो, या कोई भी ऐप में। तो आपको उस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? आप एक बार ढूंढ लिए, उसके बाद आप उस साइट पे गए, ठीक है? जैसे कि ये हैक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही, ये रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी
ये रिपॉजिटरी है। रिपॉजिटरी बेसिकली क्या होता है? रिपॉजिटरी एक प्लेस है जहाँ पे आप अपने सारे कोड और फाइल रखते हो, और उसी में एक इम्पॉर्टेंट फाइल होती है रीडमी फाइल। ये है आपका रीडमी फाइल, जो कि आपके रिपॉजिटरी के फ्रंट पेज पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आपने किसी प्रोजेक्ट को ढूंढा, उसके रिपॉजिटरी पे गए, तो आपको वहाँ पे रीडमी फाइल दिखेगा। उस रीडमी फाइल में आपको सारी डिटेल्स, you will get all the details, how you can contribute, why should, I mean how he will tell the steps that you need to follow to contribute on this repo. Okay, you can also find their Discord channel. On their Discord channel, they have there is a project sharing section. Here people are sharing their projects. You can simply go to this channel and find the GitHub repositories which is participating, and you can start like for example, he has shared something. You can take any which is according to you, where you can just directly find. So this repository is participating in Hacktoberfest, and you can contribute in this repository. Okay. Next step is क्रिएट एन इशू। सो आपको कंट्रीब्यूट करना है, बट आप ऐसे डायरेक्टली तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इशू ढूंढना पड़ेगा, मतलब आप किस चीज पे काम करना चाहते हो, कौन से इशू पे, किस चीज पे। तो मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, वो HTML और CSS पे है, ठीक है। उसमें आपको HTML CSS के थ्रू, नॉर्मल या रिएक्ट के थ्रू, वो आपने ढूंढ लिया कि आपको इस बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो उस रेपो पे जाने पे, रिपोजिटरी पे जाने के बाद, सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए आपको इशू क्रिएट करता है। यहाँ पे इशू मतलब कि आप किस फीचर्स पे, मान लीजिए आप रेपो पे गए, एंड आपने इनकी साइट्स देखी, इनके वेबसाइट्स देखी, या इन्होंने जो भी चीजें, you find that there is some mistakes in that, in their code or anything, you just on the go to issue section. Here you have to create new issue. When you click on read, you have to write there is a bug in style file, and here you can describe in detail. Please assign this issue to me. So once you submit it, here you will get a it will be visible to the owner of the repository, and he will look your issue and he will assign you. Here will be the option, and once he assigned you that issue, you can start working. So the next things will be that you need to work on this repository. For that, you know, need to fork, like in that repository. Okay, choose an issue, fork the repository. Fork the repository means, for example, this one. In this repository you want to contribute. So what the next step after choosing the issue? You need to fork this repository. What is the meaning of fork? With fork, what you are doing, you are copying the code, you are copying the exact repository to your account. This is in his account, but when we click on the fork, a copy of that repository will fetch to your account, and now you can start working on that repository. Okay, so for example, this is few repositories of mine which is participating in Hacktoberfest. Okay, so you can, these are the beginner friendly repos where you can contribute. So after, yeah, there's an issue. Create fork. Keshav, if there will be any question from the audience, then let me know. Okay. Yeah, yeah. Okay. So see, a copy of that repository came to my account, Avinash, and that repository, and here I can start working on this project on this repository. Okay. Clone the repository. Clone the repository means you are downloading it to local system. So if there is
like you are working on only the documentation portion, you can edit directly, right? For that you need to see how readme.md file work. You need to see some tutorial how you can do the changes, how you can make headings, how do you can. So you have to check that. If you are only contributing to readme file, like you want to improve the documentation of this repository, so you can directly do there. But if to do the changes in code, in there are code files, to do that changes you need to download. आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप चेंज कर पाओगे, फिर तभी इस पे आप अपलोड करके मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो इसे मुझे क्लोन करना है, राइट? तो इसको डाउनलोड करना, एक ऑप्शन रहता है डाउनलोड जिप फाइल, आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एक होता है गिट क्लोन, एक कमांड होता है गिट का, गिट गिट कमांड। बेसिकली गिट क्या है? गिट गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर के वर्जन को चेक करते हो। फॉर एग्जांपल ये पूरा ट्रैक रखता है आपके सॉफ्टवेयर को कि क्या क्या चेंजेस टाइम के साथ हुआ है। अगर कोई गलत चेंजेस हो गया तो उसको हम बैक में चले जाते हैं। तो हम इसको डाउन जिप डाउनलोड डायरेक्टली के बजाय हम इसको डाउनलोड करेंगे थ्रू गिट क्लोन के। तो आप मान लो किसी भी फोल्डर क्रिएट कर लिया, वहां पे आपको वो करना है। तो आपको क्या करना है, गिट 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 बैश ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको आपको डाउनलोड, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोग नए हैं, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको जो एक कमांड लिखना है गिट क्लोन, और जो ये कोड आपने कॉपी किया था HTTP, ये आपको पेस्ट कर देना यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद ये आपका इंटर कर देना, ये दिस विल डाउनलोड द कोड, द ऑल द कोड, दिस ऑल द कोड, एंड इट कैन बी रिफ्लेक्टेड हेयर। So here we get the code, all the files which were reflecting on the GitHub account. So now what you can do, this is where you can have any code editor. You can download any like VS Code or any editor you use. Just open all the code in that editor. So now we have all the source code to do the changes. You can do, like, if there is a small changes in the repository, you can do directly, right? You can just directly go to the that code of the section, that file, and you do the changes. Click on this button and it will get in edited mode, and then after that you need to just submit. You can do that, but for major changes you need to download the source code. Okay, and then you have to work on editor. Okay, for example, I want to do the changes in any of the file, source code library. Okay, let me check where I can do the changes on this file. Okay, I so I'm just for example, I'm showing just a small change. You can do complete change on the code. For example, I'm only showing this. So the name is this, and I'm just changing its name. Okay, so just save it. I have done the changes. This is a minor change to show you, but you can do whatever the features you are on working. After that, just go with the same where you have doing. Here you have already, downloaded. So you need to, the changes you have done, you have to push it to that repository. Here you have downloaded it from here, but you need to push it, the changes you have done. So you can directly do by just coming to this file. Okay, and do the changes. But there is another way that you can do that changes by pushing the code to this local repository. To do that, what you need to do,
Here you have already opened this git bash. You need to do few commands like let me show you the commands. So with git clone, we download the source code. After doing the changes, we do this command git add. You need to few tutorials on this to understand it more better. कुछ लोग को आता होगा, कुछ लोग को नहीं, तो जिसको गिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आप कोई ट्यूटोरियल देख लेना कि गिट क्या होता है और कुछ इसके कमांड देना। तो गिट एड्स के थ्रू जो भी हमने चेंजेस किया है ना, वो सारा हमारा ऐड हो जाता है। वो मतलब इस रिपोजिटरी में ऐड हो जाता है कि आपने ये ट्रैक कर लेता है कि क्या क्या आपने चेंजेस किया, और इसके बाद जो चेंजेस किया उसको हम कमिट करते हैं। मतलब आप चेंजेस को अप्लाई करो, और इसके साथ हम गिट कमिट के साथ वो कर देते हैं, और यहाँ पे आप कुछ मैसेज लिख सकते हो। तो ये आपका चेंजेस हो गया और ये कमिट हो गया। अब इसको हमें पुश करना है, लाइक इसको जो भी चेंजेस किया है इसको रिपोजिटरी में पुश करना है। तो इसका कमांड ये है गिट पुश यू ऑरिजिन और ब्रांच का नेम। तो इसका ब्रांच का नेम क्या है? मेन। ओके, so we will do this. Okay, सो ये आपका चेंजेस, जब ये कमांड आप करते हो तो इसमें जो आपके रिपोजिटरी में है, जो चेंजेस आप यहाँ अपने यूआई के थ्रू करते हो, वो सारे चेंजेस यहाँ पे आके पुश हो जाता है। सारे चेंजेस ये यहाँ पे आके हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए आपने पूरा चेंजेस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस चेंजेस को जिस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है वहां पे पुश करना है वो चेंजेस, मतलब कि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो उसकी रिपोजिटरी में। उसके लिए आपको पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। पुल रिक्वेस्ट बेसिकली ये बताता है कि आपने काम कर लिया है, चेंजेस कर लिया है, बस आपको उसको हमें क्या करना है, उनकी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है। उसके लिए आप पुल रिक्वेस्ट पे जाओ, यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। इट विल टेक टू हिज रिपोजिटरी। ओके, and here you can you will get the option to describe what are the changes you have done. Like while creating the issue, you will get the option to add the details. Once you are done, it will go to the pull section of that main repository, and the owner will see what are the changes you have done, what are the things you have done. Okay, so this way you can contribute. Like I haven't gone through the PPT, I just explain you with the flow. So yeah, clone the repository, make changes. You can do changes online or downloading it and then pushing it back. Then commit and push to the back. These are the command. Create a pull request. Pull request से आप ये होता है कि आप changes directly उस कोड में कर रहे हो, और वो उसको एक्सेप्ट, ओनर उसको रिव्यू करके एक्सेप्ट कर देगा। फिर वो रिव्यू करेगा एंड आपका कोलेबोरेशन हो जाएगा। मर्ज एंड सेलिब्रेट। मर्ज जब उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका पुल रिक्वेस्ट, तो वो एक सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन होता है कि हाँ, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, और आप फर्दर न्यूज़ पे काम कर सकते हो। तो आपको ऐसे इस हैक्टोबर फेस्ट में सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन के लिए चार चार पुल रिक्वेस्ट करने हैं, चार वैलिड। ऐसे भी नहीं कुछ भी कर दिया, चार वैलिड पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो भी उनकी गुडीज है वो आपको फिर वो मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में देनी होंगी कि आप ऐसे ही मत किसी रिपोजिटरी पे चले जाओ और कुछ भी करने लगो। सबसे पहले उनकी रिपोजिटरी पे जाओ, प्रोजेक्ट पे जाओ, पहले उनको रीड करो। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रिपोजिटरीज जो ऐड की हैं, लाइक फ्री कोर्सेज विद सर्टिफिकेट। सो ये एक रिपोजिटरी है जो मैंने क्रिएट की है, उस पर बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट इशू। तो वहां पे आपको वो होगा, एक सेक्शन होगा, उन्होंने अच्छे से अपनी रिपोजिटरी पे रीडमी फाइल के थ्रू एक्सप्लेन की हुई रहती है, आप उसको पढ़ो और वहां पे कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो चीज पढ़ो। लाइक रीड एवरी स्टेप्स हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू देयर रिपोजिटरी। सो कंट्रीब्यूट करने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आफ्टर फॉलोइंग द स्टेप्स, then just create an issue. You just don't directly fork it like आपने देख लिया कि ये रिपोजिटरी, इस पे हमें काम करना है, आप स्टार्ट करने लगे काम। नो नो, फर्स्ट क्रिएट एन इशू। लाइक आप उस पे काम करना चाहते हो, आप ओनर को बताओ पहले। मान लो कि आप कुछ चीजें चेंजेस करना चाहते हो, ओनर को वो चीजें नहीं चाहिए, तो आप आपका वर्क फालतू में जाएगा। तो आप पहले आप पूरे कोड को पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन को, उसके बाद फिर क्रिएट इशू करो। इशू क्रिएट होने के बाद जैसे कि ही क्रिएटेड एन इशू एंड ही वांट टू ऐड अ वन course of chat gpt, so you will be doing like that. And if the owner approves it, assign it to you, then you can start working on। और ये सारा जो होता है ना, आपको मेल के थ्रू आ जाता है कि हाँ इन्होंने इशू असाइन कर दिया, वो तो आप वो सारी चीजें करो। अब अब मैंने इसको असाइन कर दिया कि ये स्टार्ट कर सकता है, ये क्या करेगा, इस रिपोजिटरी को फॉर्क करेगा। ठीक है, फॉर्क करने के बाद इसकी इस रिपोजिटरी की लोकल कॉपी उसके सिस्टम पे चली जाएगी। फिर वो उसको ऑनलाइन चेंजेस करे या उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड के करे, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा चेंजेस करना है क्या नहीं। तो आप डायरेक्टली भी चेंजेस कर सकते हो इस रिपो में। जैसे कि मैं इस रिपो में, ये मेरे सिस्टम पे, मान लीजिए ये आपके सिस्टम पे, तो आप रीडमी में चेंजेस करना चाहते हो, आप डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और मैंने माइनर चेंज किया, एक भी ये लगा दिया, तो आप कमिट चेंजेस कर दोगे, कुछ भी ऐड करना है डिस्क्रिप्शन, तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस पे। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल मेजर चेंजेस, स्मॉल चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली उस रिपोजिटरी से ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। बट आप कोड में एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चूज प्रोजेक्ट वाइजली, प्रोजेक्ट भी वही है, आपको अच्छे से चूज करना पड़ेगा। आपको जो आता है वो उसी पे आप करना चाहो। लाइक आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है तो उसके प्रोजेक्ट ढूंढो और उस पे करो। कोलेबरेट क्वालिटी और क्वांटिटी, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ये गलती करते हैं, दे contribute in mass, like they create lots of pull requests, like just minor changes and do। So no, you have to कंट्रीब्यूट क्वालिटी, मतलब कि आपको जो कंट्रीब्यूट करना है क्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन चेंज कर दिया और पुल रिक्वेस्ट कर दिया, नहीं। और या इसके साथ आप इंजॉय करिए इस ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन को। लाइक आपके लिए लाइक एक तरह का चैलेंज है कि आप कुछ कर रहे हो, आपको अच्छा लगेगा, इससे आप नए लोगों से मिलोगे, नई चीजें करोगे। ठीक है, तो ये था हैकटोबर फेस्ट का सारी चीजें। साथ में एडिशनल रिसोर्सेज क्या है कि आप, जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं उसका ब्लॉग लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैंने एक ब्लॉग लिखा है इस पे, आप नॉर्मली उस ब्लॉग्स पे आपको सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, कैसे आप कर सकते, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ वो ऐड कर दिया है, बिगिनर फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली रेपो। ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, HTML CSS बेस पे है, वेदर ऐप है। ठीक है, और इसको मैंने होस्ट भी कर दिया है इसके थ्रू, लाइक गिटहब पेजेस टू होस्ट दिस। मान लीजिए यू हैव एनी प्रोजेक्ट, यू हैव अपलोडेड इट हेयर एंड यू वांट टू आल्सो होस्ट इट फॉर फ्री, you just need to go on setting section. Here you'll get the option of pages, एंड हेयर विद द पेजेस यू सेलेक्ट द ब्रांच, कौन सा ब्रांच को आप होस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे रूट, तो रूट मीन्स मेन ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके कोड में ढेर सारे वर्जन्स हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर के अल्फा वर्जन है, बीटा वर्जन है, तो वो ब्रांच बेसिस पे मैनेज होता है। तो इसके कई सारे ब्रांच है, तो मेन ब्रांच को मैंने होस्ट कर दिया, मेन ब्रांच पे ये कोड है। अगर हम इस पे किसी और ब्रांच पे शिफ्ट करते हैं तो उस पे अलग तरह के कोड रहते हैं, मतलब वो अलग वाला लाइक सेकेंड वर्जन का रहता है। तो थोड़ा बहुत you need to see what is branch, what is gate, what are things. So you can easily find YouTube tutorials or anything. And if you need that कि मैं आपको बताऊं क्या देखना है, you can reach to me on LinkedIn, I will let you know।
ओके। और ट्यूटोरियल्स मैंने ये पीपीटी है, मैं पीपीटी आई विल शेयर दिस पीपीटी टू द एडमिन एंड ही विल शेयर टू यू, you can use this ppt, and yeah, you can easily find more projects on their discord channel. There people are continuously sharing their resources. Yeah, so you'll get all the updates. Okay. So at last, I was talking about that resume thing and all that things. For example, how this Hacktoberfest will help. Like I have added the same thing in my resume. Like I have participated in Hacktoberfest open source projects, and I have described it about. So it will enhance your, like this. You can participate in many events, and you can, if you don't have any work experience section, you can add these programs and challenges in your. So this is a very good resume template I have. I can share this also. Plus there is the second one. I'll share it. Okay. So if you have any query or any doubt, you can ask now. If anyone has any query, he can comment in the comment section. Yeah, let me sit down. Thank you, Nikita. Can we earn money through contribution? Yeah, of course. Like how can you earn money through contributions? For example, you have a good github profile. Okay, so with that good github profile, you can, for example, you have one project. For example, for suppose your project is something on real life world problem. You have made one website, scam alert. You have created a scam alert website. Okay, so in that project is helping a lot of people. So you can apply for a sponsorship. How you can earn that? There is a system sponsorship. So on that repo you can ask people for sponsorships. There are many people who sponsors projects this, so you can earn by that way through sponsorships. So check what is github sponsorship, you'll get to know. Raj is a great session. Provide the beginners projects repository. Sure. I'll share the blog link. Let me share the blog link, or you will get. Meanwhile, people, you can ask the question. Yeah, we share this blog link to in comment section. Okay. Can we push same project to different repos? Can we push same projects to different repos? So your question, no. I mean, you can when we push a code, you need to give. Let me where the command. When we push a code, right, you need to give the link of that repository where you are pushing it. So at the time of pushing you need to give the details of that repository that get it push it only that repository. तो जैसे कि हम जब कोई भी कोड पुश करें किसी रिपोजिटरी में, उसका लिंक देना पड़ता है, तभी वो उसी रिपोजिटरी में करता है। तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से अंडर समझने के लिए आप थोड़ा गिट के ट्यूटोरियल्स देख लेना, ठीक है। डिस्कॉर्ड चैनल इज नॉट ओपनिंग, थोड़ा बाद आप ट्राई करना, या फिर से ट्राई करना। इट्स वर्किंग, आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ओपन सोर्स के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। ओपन सोर्स में आप क्योंकि ओपन सोर्स है और इसमें सारे तरह के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, डेव पे रहेंगे, ऐप पे रहेंगे, ए आई एम एल पे। बेसिकली ओपन सोर्स में क्या रहता है कि आप अपना कोड जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो किसी भी लैंग्वेज पे हो, वो आप अपने गिटहब पे रख देते हो, और वहां पे पीपल केम एंड कंट्रीब्यूट। सो कोई लैंग्वेज नहीं है। आप एज अ बिगिनर हो तो आप नॉर्मली एच टी एम एल सी एस एस ये सारी चीज़ों रिपोजिटरीज पे, इन सारे प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने रिपोजिटरीज लिंक शेयर है, वहां पे आप बिगिनर फ्रेंडली रिपोज पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो।
How to make GitHub account like you? Yeah, let me let yeah, I missed that topic. Thanks for letting me know. Let me share my screen to let you how you can make that. So basically, there is one thing, profile readme. What profile readme do? That profile readme displays on your GitHub account. When someone comes to your account, he will see that profile readme. How you can make this profile readme? For example, let me tell you, this person, he haven't added profile readme, so he is getting default views. So इसने कोई भी प्रोफाइल रीडमी ऐड नहीं किया तो उसका इसका डिफॉल्ट व्यू आ रहा है। तो आप कैसे प्रोफाइल रीडमी ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल पे? मान लीजिए आप अपनी प्रोफाइल पे हो, आपको क्या करना है, प्रोफाइल रीडमी ऐड करना है। प्रोफाइल रीडमी क्या होता है कि आपके फ्रंट पेज पे दिखता है गिटहब पे। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप रिपोजिटरीज पे जाओ। मेरे को अपनी रिपोजिटरी पे जाना पड़ेगा, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आप रिपोजिटरी सिस्टम पे जाओ, यहाँ से न्यू रिपोजिटरी क्लिक करो। ठीक, तो रिपोजिटरी, जब आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो उससे क्या होता है, आप एक नया प्रोजेक्ट सेक्शन बना देते हो और वहां पे सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो मुझे प्रोफाइल रीड में ऐड करना है, तो प्रोफाइल रीड में ऐड करने के लिए मुझे एग्जैक्ट जो मेरा यूजर नेम है वही लिखना रहता है। तो ये स्पेशल रिपोजिटरी हो जाती है। ये आपका प्रोफाइल रिपोजिटरी, ये लाइक इफ यू रिटन द सेम नेम एज योर यूजर नेम, देयर इज अ मैसेज स्पेशल रिपोजिटरी यू कैन यूज एड रीडमी एमडी टू गिटहब प्रोफाइल। तो ये आपका एज अ उस पे, तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप जाना अपने गिटहब प्रोफाइल पे, रिपोजिटरीज पे क्लिक करके उसका नाम जो होगा सेम कर देना। तो आपका, और यहाँ पे आप ऐड कर देना ऐड रीडमी फाइल। ठीक है, पब्लिक रहेगा और ऐड रीडमी फाइल क्रिएट कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक, ये ये सेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका कुछ नहीं रहेगा। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में आप में कुछ डिटेल्स ऐड नहीं किए रहोगे, लाइक, तो मैंने ये सारी चीजें एडिट की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सारा कुछ हटा देता हूँ इससे, सिर्फ हेलो रखता हूँ, तो स्टार्टिंग में आप कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको सिर्फ ये दिख रहा है। ये जो इतना बड़ा सा एक्सपैंड हुआ था ना, फिर मुझे नॉर्मल डिफॉल्ट जो सबकी प्रोफाइल पे दिखता है वो दिखेगा। तो हमें ये जो प्रोफाइल रीडमी बनाई ना, इसको हमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या डिटेल्स ऐड कर सकते हो, क्या चीजें, मेरे पास एक रिपोजिटरी है जहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे मतलब लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट रेडमी टेम्पलेट्स जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो उसकी भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे इस पे ये शो कर रहा है, कोई भी मेरे प्रोफाइल पे आएगा ऐसी चीजें, ये डिटेल्स ये सारी ऐड। थोड़ा आपको ये डॉट एम डी फाइल के बारे में, डॉट एम डी फाइल के जैसे आप एच टी एम एल सीखते हो, एच टी एम एल में टैग्स जो यूज होता है उसको कैसे ऐड करते हो, वो सारी चीजें आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि एम डी फाइल में टैग्स कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हेडिंग दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। ठीक है, तो वो जो रिपोजिटरीज की बात कर रहा था जहाँ पे मैंने कलेक्ट किया है प्रोफाइल रीडमी के टेम्पलेट्स, जैसे मेरा टेम्पलेट है जो मैंने यूज किया है, ऐसे आपको वहां पे भी मिल जाएगा। या, सो दिस इज द रिपोजिटरी। Here I have collected list of important, I mean awesome profile readme. So आपको जैसे कि इसका है, he has added very good profile readme. So what you can do, just come to this repository, okay? After that, go to his repository, fork it, या आप मेरा वाला ही ऐड करते हो तो मेरी रिपोजिटरी पे जाना, मेरी उस पे जाना, ये आ गया। ठीक है, लोड नहीं हुआ, so let me refresh it first। ये आ गया। ठीक है, इसको फिर मुझे फॉग कर लेना है। आई थिंक ही हैवंट अलाउड, बट या देयर इज अ सम ग्लिच। या आप फॉग कर लिया मैंने।
क्रिएट फॉक। तो इसका जो कोड हो गया ना इस प्रोफाइल रीडमी का, वो मेरे लोकल सिस्टम पे आ गया, ठीक है। अब नॉट लोकल सिस्टम, मेरे प्रोफाइल पे, गिटहब प्रोफाइल पे। अब इसको, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे भी एडिट कर सकता हूँ। तो मैं इस पे एडिट सेक्शन पे गया, ठीक है, रीडमी के, और इसको कोड को मैंने, आई कॉपीड ऑल, ठीक, आई कॉपीड ऑल एंड आई गो टू माई अकाउंट बैक एंड गो टू रिपोजिटरी, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, और इसका नेम सेम मैंने रख दिया। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। आप क्रिएट रिपोजिटरी कर दोगे, आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक, आप उसको फिर एडिट कर लेना। स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक या कुछ डिफॉल्ट व्यू होगा। उसको आप, जो आपने ये कॉपी पेस्ट किया, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कमिट कर दीजिएगा। देन योर प्रोफाइल विल लुक लाइक दैट, द वन विच यू आर शेयरिंग। ओके। सो आप ऐसे अपनी प्रोफाइल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो मैं बस टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ। या share this link. Okay, next question. Sure, I am first year and learning C programming language, so I can take participate in Hacktoberfest, or I need to learn Python. No, no, you can do with C. Find projects related to C. You will get that the resources I have shared, or go to Hacktober site or Discord channel. There you will get the list of types of projects. So if you want to contribute using C, then you can contribute using C. हाउ टू अनफॉर्क। फॉर्क इज बेसिकली अ बटन, जिस पे आप क्लिक करने पे क्या होता है कि जिस रिपोजिटरी, मतलब जिस प्रोजेक्ट को क्लिक करते हो, उसका कॉपी जो होता है वो आपके अकाउंट पे आ जाता है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। अनफॉर्क नहीं कर सकते, आप उस रिपोजिटरी को डिलीट कर सकते हो। लाइक आप, कॉपी आ गई है तो आप कॉपी को आप अपने अकाउंट पे नहीं रखना चाहते हो, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो सेटिंग में जाके डिलीट सेक्शन से आप उसको डिलीट कर सकते हो। या थैंक यू अमूल्य। Any more question, guys? Don't hesitate. Or if you don't want to ask here, and if you had any question, you can reach out to me on LinkedIn. Which language is used for backend of projects? There are many languages you can work with. The main language is, if you know JavaScript, then it is very good. With the help of JavaScript, you can do like learn Node.js for backend. You can also Java. So it based on your preference. Different companies use different coding language for their backend. So you have to research in which you have interest. If you're talking about the Hacktoberfest or this session. Mhm. So if you are a beginner, then go with the first of all learn JavaScript, because JavaScript is used everywhere and it is widely used. So learn JavaScript, then learn Node.js. Yeah. And there is a for backend we use SQL, MySQL. So you need to learn those things. So you guys understood how you can start contributing. If you have doubt on that, you can ask. अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया।
सो आई गेस सबका क्वेरीज हो गया, तो एट लास्ट हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, आप स्टार्ट तो कर दोगे कंट्रीब्यूशन, बट बीच में आप प्रॉब्लम फेस करोगे, तो आप कम्युनिटी मेंबर से, कम्युनिटी हेड से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में। बाकी मुझसे कोई हेल्प चाहिए रहेगा, आप यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन। आई विल हेल्प यू इन योर uh, this Hacktoberfest contribution, also in your resume, also getting you off-campus updates. So for all those things, you can reach out to me on LinkedIn. Yeah, Keshav, there is no any question. You can conclude. Even after the session, when you will do the process, you can ask us in the Solas community. We are available for you 24/7. I hope you all have joined our community. If not, I can post the link in the comments again. I hope these sessions add value to your learning. Thank you, Avinash sir, for taking our time Yeah, from a busy schedule and delivering us such an amazing session. yeah. Thank you, Thanks. bro. Thank you, I everyone. would, And yeah, like if I people would, have any doubt, yeah, they can reach out. Okay. Yeah. Keshav. I would like to thank the audience for supporting us. Special thanks to my hardworking team of AR Club and the Sorex network for finding me capable to host this session. Thank you, Avinash sir. Yeah. Thank you. So I'm ending. Yeah. Should I Bye. end the Bye, stream? everyone. Yeah. There is a last question. Someone Okay, asked okay. Himanshu, प्रैक्टिस कैसे करें, लिमिटेड प्रोग्राम्स रहते हैं, कुछ यूनिक करना हो उसमें लिए कहाँ से ले प्रोग्राम्स। देखिए, अगर आप हैक्टोबर फेस्ट की बात करते हो, लिमिटेड प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप और सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसके लिए आपको अपडेट्स मिलना चाहिए, उसी के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ कि आपको मैं सारी अपडेट्स, आप लिंक्डइन मैं लिंक्डइन के थ्रू पोस्ट करता ही रहता हूँ। साथ में मैंने अभी व्हाट्सएप चैनल बनाया है, तो वहाँ पे आपको सारा इंटर्नशिप, जॉब, कोडिंग कॉन्टेस्ट, हैकाथॉन्स, उसकी अपडेट्स मिलेंगी। इफ यू आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट हैक्टोबर फेस्ट, ये लिमिटेड रहता है, तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कैसे रिपोजिटरीज को, जहाँ पे यूनिक आप लोगों को देखो, यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट्स क्या क्या है मेंशन्ड है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने आइडिया सोच सकते हो। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यूनिक आइडिया। थैंक यू। ओके, हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट। ओके, so this will Keshav will tell, and the team, so the organizer will reach to you. Yeah, Keshav, you can. सर्टिफिकेट आपको मेल्स पे मिल जाएंगे। बाकी ग्रुप में पता कर लेना, कम्युनिटी चैट होगी आपके पास, उसमें Hmm. सब ऐड होंगे, पूछ लेना उसमें। सो आई व्हाट्सएप गाइस कम्युनिटी दिस। व्हाट्सएप व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक शेयर कर दीजिए कोई। ओके, ओके, आई विल शेयर। Yeah, Keshav, thank you for inviting, and hope if there will be any need in future, I can come for the session for this wonderful community. Thank you, everyone. या थैंक यू सर।